okay, but that may not be the correct way. So many times in between they will introduce one more mathematical steps. तो anyway, इतना ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, you don't have to worry also. तो let us say that कि this is a max pooling. वैसे यहाँ पे 8 है तो ये 8 लेंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 लेंगे, और यहाँ पे 7 है तो 7 लेंगे, ठीक है. So this is the technique that they will do as part of max pooling. The other technique is called as average. तो एवरेज में मतलब है 2 + 2 + 9 sorry 2 + 2 4 + 4 8 + 9. Okay, so 17 will be the this one divided by 4. So roughly they will take that way. Okay, so it is another technique is average. However, majority of the times they will basically use the max pooling. The reason is because it is very easy to do. To find the highest among some small set of pixels or small set of values is very easy. Overtaking an average and then dividing, because it's a mathematically computationally intensive thing when you are going to do the thing in the real time, क्योंकि ये सब real time में करना पड़ता है as part of image processing. Otherwise you will not like that thing. मतलब अगर आप वीडियो पिक्चर ले रहे हो और उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो नॉर्मल रिकॉर्डिंग होता है कोई भी कैमरा में, मतलब मोबाइल फोन में. फिर उसके बाद उसका MP4 बनता है, तो वो many times it is done offline, it is not done online. So the first thing it will be done is like a recorded, like a raw video, and then later when you say that or say suppose if I take a photo, then it will be raw photo, and then when you actually say that save, or at times nowadays it is actually saved by default, तो JPG format में save होता है. तो JPG format में save हो गया मतलब वो all techniques, lossy techniques करके आपका वो save हो चुका है. Whether it is your camera is a 5 pixel camera, 5 million pixel camera, या 5M camera, या 10M camera, या 50 million, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि in the end वो लॉसी कंप्रेशन लॉसी होता है. सो ये सब टेक्निक्स इंटरनली वो यूज करेगा. ऑटोमेटिकली वो सेव जब होता है JPEG में, तो वो सेव्ड करते वक्त ही वो लॉसी सेविंग हो चुका है, क्योंकि उसका फॉर्मेट ही JPEG है. तो एनीवे, सो ये सब टेक्निक्स होगा, ऑल दिस थिंग्स टेक्निक्स विल बी देयर. सो नाउ द लास्ट लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, विच इज कॉल्ड एज फुल्ली कनेक्टेड लेयर. तो मैं आपको अभी जो डायग्राम बता रहा था यहाँ पे, सो ये जो लास्ट लेयर है विच इज बेसिकली द फुल्ली कनेक्टेड लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. भाई बिकॉज ये तो मैंने इमेज प्रोसेसिंग रिलेटेड किया, उसके बाद मुझे फ्लैटनिंग करके और कुछ यहाँ पे करना है, एंड देन विच विल अलाउ मी टू एड द डिसीजन मेकिंग, वेदर इट इज अ सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स. बट ये इंपॉर्टेंट लेयर हो जाता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर. तो फुल्ली कनेक्टेड लेयर में ऑल नोड्स आर फुल्ली कनेक्टेड. देन फुल्ली कनेक्टेड लेयर इज अ वे ऑफ लर्निंग नॉन लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द हाई लेवल फीचर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉन लीनियर है, इट्स नॉट लीनियर, बिकॉज यू आर ड्रॉपिंग, यू आर कन्वर्टिंग इनटू स्मॉलर साइज, देन सम पूलिंग में आप ड्रॉप कर रहे हो, फिर उसमें से मैक्सी ले रहे हो. तो ये सब चीजें नॉन लीनियर हो रही है अभी. तो यू रिक्वायर अ लेयर विच विल बी एबल टू डिसिफर, which will able to make a decision to the last layer, which will be the output layer, so that the learning is done and then the actual decision it can come up. Okay, so FC layer is a way of learning non-linear combinations of the high level features. That's what I told you, high level features, output of the convolutional layer, and then the FC layer is learning a possibly non-linear function in that space. Okay, now what is the support in Keras? So there is a support in Keras which we are going to use. So the support in Keras is there is a function which is called as con2d. Con2d is a function like जैसे printf statement है C में, या strings के आपको काफी है, string length, string compare like that. So this is a function con2d, and then con2d basically takes various parameters. Okay, we'll see that we can take a look at those parameters for the sake of academic purpose. But इसमें से 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है फिल्टर, दूसरा होता है कर्नल साइज, और तीसरा होता है इनपुट शेप. ओके, सो व्हाट इज अ फिल्टर? तो फिल्टर इज लाइक नंबर ऑफ फिल्टर्स दैट कन्वोल्यूशन लेयर्स विल लर्न फ्रॉम. दैट मींस दिस वैल्यू इज नॉर्मली 32 और 64 होगा. मतलब इट इज एक्चुअली अ नंबर विच डिटरमाइंस द आउटपुट फिल्टर्स इन द कन्वोल्यूशन. अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो 6x6 या 8x8, जो भी हम लोग एक 8x8 एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है मतलब लेने का. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए 6x6. तो ऐसे में एक बार कितने ब्लॉक प्रोसेस कर रहा हूँ, तो पीपल माइट प्रोसेस 32, पीपल माइट प्रोसेस 64. ओके, so that is where the this number comes. तो ये एक नंबर हो गया. तो नॉर्मली ये 32 या 64 होगा. you can try that later. Another thing is the kernel size, जिसको मैंने अभी फिल्टर बोला था.
या मास्क बोला था रादर, तो मास्क जिसको बोला था मैं, ये कर्नल साइज है. सो नॉर्मली इट विल बी ऑड इन नंबर. तो नॉर्मली पीपल विल टेक डायमेंशंस ऑफ द कर्नल विल बी लाइक 1/1, 3/3, 5/5 एंड 7/7. तो मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था तो आई टुक द साइज ऑफ 3/3. ओके, सो ये 3/3 मैंने लिया था यहाँ पे आपको. तो यू कैन प्ले विथ इट लेटर 5/5, 7/7 एंड ऑल दैट. ओके, so 3/3 is one of the very commonly used kernel size, which is basically like a mask. Then input shape is very important, that is the shape of the input image. Okay, so whether the image that we are going to process, whether it is what is the shape, okay, because we have to tell to this con2d function. So there are multiple other parameters which have to be given to this con2d function. So these three are important, that is filters, then that is either 32/64, then kernel size, that is the mask size, and then the input shape of the image. Then comes the activation. तो ये इसके बारे में मैंने आपको already I have told you about activation. So activation is a function that we are going to invoke, and you know now that ReLU is a very widely used. Then other is sigmoid and other things. Then pooling. So pooling is max pooling. I have told you that. And normally we have to give the pool size. तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट मतलब लोग जो नॉर्मली यूज होता है वो 2 होता है, 2 मतलब कॉलम वाइज एंड देन द रो वाइज. ओके, सो रो वाइज एंड कॉलम वाइज वी आर गोइंग टू बेसिकली यूज इट. ओके, so I'll explain this, or I'll tell you this later when we actually go and define the model. So this max pooling is like skipping every alternate pixel. So that is where the pooling, and then you taking the maximum of that particular area. Okay, so that is called max. So first you do the pooling and then you take the max. Okay, that means आपने डाउन सैम्पलिंग किया हुआ है और उसके बाद आप मैक्स पूलिंग कर रहे हैं, मतलब उसमें से मैक्स वैल्यू उठा रहे हो. So these are the three main things that are to be defined before we call the function con2d. Then let's now go into understanding the hands-on functionality about the activity. So what we are doing is I'll first today explain you, because you will have to do some homework, or rather not the homework but little bit of preparatory steps at your end, then only you can actually start implementing this. Okay, तो इसमें आपको क्या करना है, तो let me first explain you. So we are going to download the images of which are real images, which are available in Kaggle, and they are also available in Microsoft site. Okay, so Kaggle is a place, Kaggle, Kaggle. Okay, so that's a place where there are a lot of images are available, and then obviously the various images are available in the Microsoft site. So we are actually going to use the Microsoft site pe there are images of dogs and cat. Okay, now why I am taking these images, because they are the real scenario. Okay, now why do I say it is a real scenario, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो लिया था ट्राउजर्स और ये पुल ओवर वगैरह का, वो छोटा सा, दो देर इट वाज हैविंग 60,000 इमेजेस एंड 10,000 फॉर टेस्टिंग, बट ओवरऑल डेटाबेस या डेटा ऑफ इमेजेस बहुत छोटा था. वो एक तो छोटे साइज के इमेजेस थे, एंड दे वर नॉट दैट वे रियली द रियल इमेजेस. मतलब रियल इमेजेस विल बी नॉर्मली ऑफ द साइज say 600 by 400 या एटलीस्ट 350 by 240 लाइक दैट, मतलब बड़े साइज के होते हैं. वो एक छोटा, आपको एक एग्जांपल के तौर पे कंसेप्ट सिखाने के लिए हमने छोटे इमेजेस लिए थे. तो यहाँ पे जो ये इमेजेस है, दीज इमेजेस आर एक्चुअली द रियल इमेजेस, एंड दिस डेटा जो है इसका मतलब साइज है वो ऑलमोस्ट 1 गीगाबाइट्स है. तो ये ह्यूज डेटा है, तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा आपके लैपटॉप पे, आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा. Then only you can actually work with this experiment. Okay, so this why this is 1 gigabytes I am using it, because then you get a feel कि अरे रियल लाइफ में ये तो ऐसे इतने बड़े बड़े फोटोज होंगे, और हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट द डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स ऑन द रियल स्टफ. ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कंप्लीटली प्रैक्टिकल सिनेरियो लिया हुआ है. उसके अलावा बिकॉज नो दिस इमेजेस आर गोइंग टू बी लाइक अ मतलब इमेजेस जो रॉ इमेजेस है, तो इसका साइज भी अलग अलग है. मतलब सम आर ऑफ एक्स साइज, सम आर ऑफ वाई, मतलब एक्स बाय वाई, सम आर से x1 y1, अनदर इज x2 y2 लाइक दैट. तो वो एक इसमें आने वाला है केस. उसके अलावा ह्यूज एंड साइज वो तो मैंने बता दिया, एंड दे आर प्लेंटी इन नंबर्स, ऑलमोस्ट
25,000 images are there, so close to 12,500 of dogs and 12,500 of cat. So ऐसे there are good amount of images are there. Okay, then we are going to use a OpenCV library. तो आपको ये note करना है, you will require to install this. Okay, it's very easy to install, but I am just trying to tell you. So this is a OpenCV मतलब computer vision library. Okay, so this is a Python library. So we are going to use this library which is used for image and video processing. Okay, Keras also has a support for video processing, मतलब image processing. However, to start with, it is better to use this OpenCV, and many prefer use this OpenCV. Okay, so OpenCV is a one of the library that is used for image processing. Okay, so we are going to use that. And why you require this images library? Because we have to do processing on the images. Why? क्योंकि अभी actual images, it's like you have taken photos from your camera, और उसके ऊपर अभी आपको कुछ प्रोसेसिंग करना है. मतलब कोई तो एक वो फोल्डर में रहेंगे, फिर फोल्डर से आप उसको प्रोसेस करोगे, फिर उसको एक्चुअल पाथ दोगे कोड में, एंड ऑल दैट. लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू प्रिपरेटरी स्टेप्स, एंड दे आर क्वाइट good significant preparatory steps before you actually start implementing a DL algorithm on it. तो इसलिए अपने को OpenCV library का use होगा. Then we are going to generate data. That's what I was trying to explain to you. So we are going to generate data, and from that 1 gigabytes of data roughly, which is say 25,000 images, we are going to generate some data, or rather good amount of data for training, and some data, some portion from that training data will be used for testing. मतलब जैसे हमने last time 60,000 images for the training था और 10,000 were for using testing, उसी तरीके से, क्योंकि ये तो हमारा फोटोज है, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग ये डाउनलोड करने वाले हैं, तो हमको ये अब डिसाइड करना है कि कौन से डेटा पे हम लोग ट्रेन करूंगा और कौन से डेटा में टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा. Then you save and retrieve. अब ये save and retrieve model this is not the deep learning model. This is the model which you have used it to create this training and testing data. Why? Because to create this data, and I'll tell you that you will understand the importance when we will start coding the Python. To generate the data itself, it takes almost 10 minutes. Okay, और at times अगर slow computer है तो और ज़्यादा ले सकता है, but like 5 to 10 minutes on an average it is going to take. And you can't keep on doing it daily. So the normal habit is, once you have trained your model, and now you want to basically test it with a new data. So new data can be the data can be newly obtained, but the data that you have used it for training, you save it, because preparatory step itself is basically quite significant. Okay, and it takes time. So generating the data plays a very important role. Okay, अभी तक हमने कुछ चालू ही नहीं किया काम about actual deep learning. So ये generation of the data itself is quite a good amount of data, good amount of work. Then people retrieve, save and retrieve. So what they will do today, they will say, for example, for the first day you are doing, you save it. So first day तो ठीक है, लेकिन let's say you come next time, or say you work after 3-4 hours. Then you can't keep on doing the same thing, you will get bored. So you just retrieve the model. Okay, now this is an optional step. Why I am saying optional step? For college level या lab level पे, लेकिन in the reality saving and retrieving is important step. In reality I am talking about, because suppose if it is a data related to stock market, if it is a data related to some other thing which is humongous in nature, then you can't keep on basically doing generating the data step again and again. Okay, and you will come to know this more later when you actually start coding. Then after this only we will actually perform the convolutional neural network. So in that, what are we going to do? We are going to add a CNN layer, that is convolutional neural network. Then we will add activation, we will do pooling. Similarly, one more layer, we will add one more layer in the sense one more group, because this each is a layer. CNN is a layer, activation we will add, pooling we will add. Similarly, once again we will add CNN, activation and pooling. So this is like a group of layer. Then we will add the flattening layer or a dense, and then we will add the dense layer. So we will first flatten, then we will do dense layer, which is fully connected, and then finally we will add the output layer. Okay, then obviously we will do the compilation.